सो आज की क्लास में काफी ज्यादा कंटेंट आप यहाँ पे आप देखोगे. सो यू विल बी सीइंग नंबर ऑफ थिंग्स इन टुडेज क्लास. सो अगर कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देन प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये रिपीट कर दो. ठीक है, बिकॉज यू माइट कम अक्रॉस नंबर ऑफ न्यू नेम्स ओवर हियर. ओके, सो नाउ लेट मी ऐड सर्टेन. All right, so let's have a revision of oogenesis यहाँ पे फटाफट and then we can move ahead. So formation of ova inside the ovary is called as oogenesis. इसको हम कहते हैं यहाँ पे as oogenesis, and this is something which initiate even before the birth of the child. So baby के born होने के पहले से oogenesis वहाँ पे आपका start हो जाता है, right? So initially as I've told you कि initially baby जब born नहीं हुआ होता fetal stage पे, तभी आपके oogonia वहाँ पे develop हो जाते हैं, and those oogonia also turn into the primary oocyte. राइट. सो आपके उगुनिया वहां पे डेवलप करते हैं. उगुनिया स्टार्ट कर बनने के बाद सो आपके जो उगुनिया बनाए जाएंगे बेबी के अंदर बिफोर द बर्थ, दे आर ऑल फॉर्म वाया माइटोसिस. वो सारे बनाए जाते हैं वाया माइटोसिस. ओके, एंड देन व्हाट विल हैपन, इनमें से कुछ उगुनिया यहाँ पे होंगे, दे विल इनिशिएट द मियोसिस 1 और ये लोग रुक जाएंगे आपके प्रोफेज 1 के अंदर. एंड नाउ यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ प्राइमरी oocyte, और हम इन्हें यहाँ पे बोलेंगे एज अ प्राइमरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte इस तरीके से आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है, सो यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte है, एंड याद रखना आफ्टर बर्थ कोई नए oogonia आपके ऐड नहीं होते. देयर इज नो एडिशन ऑफ न्यू oogonia इन द बेबी, राइट. सो नाउ यू हैव अ प्राइमरी oocyte एंड ये है अरेस्टेड स्टेट में. अब ये अरेस्टेड स्टेट में कब तक रहेंगे, कौन सी एज तक आपको मिलेंगे अरेस्टेड स्टेट के अंदर, वैसे ही बता दो कोई भी अनम्यूट करके. प्राइमरी oocyte आर इन अरेस्टेड स्टेट ऑफ प्रोफेज 1, ये कौन से साल तक रहेंगे ये ऐसे कंडीशन के अंदर? Puberty. Right. Until the girl attains the puberty, they are going to remain in the arrested state. Okay. Now, as soon as the girl hits puberty, then the things are going to change. So at birth, you have a millions of like oocytes in the present, but puberty तक आपका नंबर यहाँ पे काफी कम हो जाता है. You have a number of around like 60,000 to 80,000 oocytes आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. देन आपके यहाँ पे क्या होता है, देन दीज oocytes आर नॉट अकेले, उनके आसपास कुछ है वहां पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी फॉलिकल. सो प्राइमरी फॉलिकल इज मेड अप ऑफ माय ग्रैनुलोसा सेल्स, जो इनके आसपास आपको मिलेंगे देखने के लिए. और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, इट इज द कवरिंग ऑफ द oocyte, प्राइमरी oocyte, राइट. सो एट प्यूबर्टी अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस आता है, एज सून एज द दिस इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ द हार्मोन्स, सो वो टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग, और प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल. अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर यू विल हैव अ मच मोर नंबर ऑफ लेयर, यहाँ पे आपका लेयर्स का नंबर आपके यहाँ पे बढ़ जाता है. सो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपको यहाँ पे लेयर्स का नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा. यू विल हैव लाइक मल्टी लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल. आपको यहाँ पे थीका सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. यू विल फाइंड थीका सेल्स आर बीन सीन ओवर हियर, राइट. थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में हमने इसे डिवाइड कर दिया यहाँ पे. दिस इज माय सेकेंडरी फॉलिकल. अच्छा, टर्शियरी फॉलिकल मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा जब ये ग्रो करेगा इनटू टर्शियरी फॉलिकल, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए? एक जोना पेल्यूसिडम और एंट्रम, और जोना पेल्यूसिडा उसकी लेयर को बोल देंगे, और एंट्रम. हाँ ठीक है, राइट. सो जोना पेल्यूसिडा का लेयर हमें वहां पे दिखना है, उसके साथ यू विल हैव एंट्रम. एंट्रम इज समथिंग यू विल गेट टू सी एज अ फ्लूइड फिल्ड चेंबर. आपको टर्शियरी फॉलिकल के अंदर व्हाट यू विल गेट टू सी, दैट यू विल हैव अ फ्लूइड फिल्ड चेंबर, एंड दैट फ्लूइड फिल्ड चेंबर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एंट्रम, राइट. और जोना पेल्यूसिडा हम यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, बट अगर आप रियल सेंस में अगर आप इसे देखो तो जोना पेल्यूसिडा आपका काफी पहले आ चुका होता है. बट आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से आपका जोना पेल्यूसिडा आपका यहाँ पे आ रहा है. बल्कि अगर एनसीईआरटी देखते हो तो एनसीईआरटी में तो वो लोग बता रहे हैं कि आपका आफ्टर सेकेंडरी oocyte यू सी द जोना पेल्यूसिडा, बट ऑल ब्लैक.
everything is black. ऑलराइट क्लास 2 मिनट वेट करिएगा, यहाँ पे पावर कट हुआ है, सो जस्ट वेट फॉर लाइक कपल ऑफ मिनट्स, आई विल बी जॉइनिंग अगेन, ठीक है? या ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, आपको भी आवाज आ रही है? सर हाँ सर, रिपीट कर कोई आपकी आवाज बार। सर एको हो रहा है। अब नहीं होगी, अब होपफुली नहीं होगी। यस सर। ठीक है, ऑलराइट, सो ओके, द थिंग द थिंग इज, yeah, there has been a power cut on my end, so you won't be able to see me right now, but I hope हमारा कनेक्शन बरकरार रहेगा because of the, yeah, phone. ऑलराइट, हाँ जी, गुड इवनिंग मिसबा एंड गायत्री। गायत्री प्लीज टाइम पे आइए, इट्स 8 बजे का टाइम है, प्लीज बी ऑन टाइम, राइट? एंड हाँ प्लीज, ये इट हैज, आई हैव सीन यू लाइक मल्टीपल टाइम, प्लीज बी लाइक मेक श्योर दैट यू कम एट 8। हाँ जी मिस, और बताइए आप कैसे हैं काफी दिनों के बाद? फाइन सर। ऑलराइट, ठीक है, ओके। So now I'll just I think you can all see the screen and be very vocal because probably, yeah, if there's something you don't understand then please be very vocal about that. So now you have a यहाँ पे आपको मिल रहा है, you can see the, and let me, अगर slide ना दिखे ना तो बताना मुझे because network यहाँ पे fluctuate कर सकता है. So you have a tertiary follicle and it will have the antrum, ठीक है? And now what will happen inside the आपका जो प्राइमरी oocyte है, अब ये आपका खत्म करेगा मियोसिस 1, अभी आपका मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म करेगा, एंड देन यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte आपका बनता है, और दूसरी चीज आपके यहाँ पे बनती है, दैट इज योर पोलर बॉडी. सेकेंड चीज आपको बनेगी यहाँ पे, दैट इज योर पोलर बॉडी, ओके? तो दो अनइक्वल साइज के सेल यहाँ पे मेरे बन गए. अब मेरा सेकेंडरी oocyte विल इनिशिएट द मियोसिस 2, सेकेंडरी oocyte मेरा यहाँ पे मियोसिस 2 इनिशिएट करेगा, एंड देन इट विल गेट अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 के अंदर. सो मियोसिस 2 आपका यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा, बट ये रुक जाएगा एट द मेटाफेज 2 के अंदर आके, ये रुक जाएगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, या प्लीज गिव मी बिकॉज़ तब आई विल गेट टू नो दैट यू आर एबल टू हियर मी. ओके, सो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है. नाउ योर टर्शियरी फॉलिकल कंटिन्यू ग्राफिन फॉलिकल, ये थोड़ा और साइज में इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंटरम का साइज भी बढ़ जाता है यहाँ पे. एंड देन व्हाट, अब लास्ट चीज जो यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे बन चुका है, अब ये आपका यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा. सो नाउ माय सेकेंडरी oocyte विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट. अब जैसे आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो जाता है, सो आपके हुआ क्या, आपका जो ग्राफिन फॉलिकल था यहाँ पे वो आपका ब्रेक हो गया. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव यू अ रफ पिक्चर. यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पे होगा, राइट? तो दिस इज सर, गोइंग टू, हाँ जी बेटा बताइए. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही.
अच्छा 3 नहीं दिखेगा मेरी, ओके ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ, Yes. थैंक यू सो मच बताने के लिए। Because, थोड़ा सा just wait a minute. ठीक है। अच्छा अब क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलो चलो बहुत बढ़िया। सो अब यहाँ पे हुआ क्या, आपका यहाँ पे जो ग्राफेन फॉलिकल जो यहाँ पे था वो आपका हो गया यहाँ पे रप्चर। अब जैसे ग्राफेन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर हुआ तो इससे जो बाहर निकल के आएगा दैट्स गोइंग टू बी द oocyte। सो यहाँ से आपका oocyte निकल के बाहर आएगा, सो यू विल फाइंड नाउ द oocyte इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस ग्राफेन फॉलिकल और ये आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो द oocyte व्हिच हैज कम्ड आउट फ्रॉम द ग्राफेन फॉलिकल, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी oocyte, जो आपका यहाँ पे बाहर निकल के आ चुका है। तो ये सेकेंडरी oocyte को हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया एंड दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग, हो रहा है कि आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है। अब सेकेंडरी oocyte जब मैंने यहाँ पे रिलीज हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकेंडरी oocyte हैव गॉट रिलीज्ड। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कट याद रखनी है कि आपका जो ग्राफेन फॉलिकल यहाँ पे टूट चुका है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग नोन एज योर पर्टिकुलर कॉर्पस ल्यूटियम। दिस विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर के अंदर और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये बात याद रखना कि आपका जो ग्राफेन फॉलिकल यहाँ पे था, जैसे ही उसने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर लिया देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो चुका है, ओवा आपका बन चुका है, उसने उसको हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज पे अटका हुआ है, मियोसिस के कौन से स्टेज पे अटका हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। Prophase 1. नहीं नहीं, सेकेंडरी oocyte है ये, Metaphase सेकेंडरी two. oocyte। Yeah, it is a metaphase too. So when we asked you that my secondary oocyte is attached or it is arrested in which particular state, then the answer is always going to be your metaphase two. Nothing else. It is going to be arrested in the metaphase two of my meiosis two. So that should be clear to all of you. That should be very 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 clear to all of you. Please prophase one वाली चीज हो गई। That prophase one वाली चीज तो उसने complete कर लिया। Understand one thing. When it was a tertiary follicle, at that point of time only, the primary oocyte completes the meiosis one, right, and gives you the secondary oocyte. Okay, gives you the secondary oocyte, and that secondary oocyte is something which starts the meiosis 2 but stops at the metaphase 2. इस पे आकर रुक जाएगा। So understand this thing very clearly कि secondary oocyte when it has been released, उसने meiosis 2 खत्म नहीं किया है, उसने वहां पे meiosis 2 कहीं से भी खत्म नहीं किया है। So that should be clear to all of you. That should be very very clear to all of you. राइट, यहाँ तक ये समझ आ रहा है? बताओ यहाँ तक समझ आ रही है ये सब चीजें? ऑलराइट ओके, मिसबा एंड या मिसबा इज द न्यू पर्सन ना यार। मिसबा यू विल हैव टू गो थ्रू सम लेक्चर्स ऑफ द पास्ट, फिर एक बार उन्हें आप देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। Yes, sir. I watched the lecture. ओके ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट। कभी कोई चीज अगर कंफ्यूजिंग लगे तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, जस्ट लेट मी नो दैट। ये इस तरीके से आपकी कहानी यहाँ पे होती है खत्म। एंड प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग दैट योर सेकेंडरी oocyte हैज अ आउटर कवरिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। कोई बताएगा मुझे जोना पेलुसिडा किससे बना हुआ होता है? Glycoprotein. Right, glycoprotein. Zona pellucida is made up of my glycoprotein. And surrounding the zona pellucida, you have a group of cells, and those group of cells are collectively, you have a name for them. That's my corona radiata. So right outside the zona pellucida, you have a one more layer. That is my corona radiata. Will be seen over there. So this is a story which should be clear to all of you. So my secondary oocyte is being released. अब यहाँ से हम देखते क्या होता है. Okay. Now let's try to see what will be happening after this. Now assume that this is the secondary oocyte. Assume that this is the secondary oocyte. Okay, this is the secondary oocyte. Now this secondary oocyte, which has just got released from the particular graphene follicle, now it has been out in the ovary. Okay, it has come out of the ovary. Now initially it will go into the fallopian tube. Now please understand, यहाँ पे meiosis 2 चालू है, right? It has like it is arrested in the metaphase 2 में it has been arrested. So my meiosis 2 will get completed only after fertilization. So this something you should be aware about, that the meiosis 2 will get completed. Meiosis 2 will get completed
will get completed only after only after fertilization. Only after fertilization. So that is again one thing you should be very much clear with, that meiosis 2 has been arrested. Now it will only get completed after fertilization. So whenever there's a gamete, female gamete fuses with the male gamete, whenever you have the female gamete fuse with the male gamete, then after you will find the meiosis 2 will get completed. Now please understand one thing. Now let's take this hypothetical scenario lete hain, that you have the male gamete, that is the male sperm over here, right? So you have a male sperm, haploid male sperm, and this comes and fuses with the secondary oocyte. This comes and fuses with the secondary oocyte. ये आके fuse करेगा, assume करते हैं secondary oocyte के साथ. Now as soon as the fertilization takes place, what will happen? The जैसे ये touch करेगा ना, basically जैसे ही आके इसको touch करेगा, as soon as it comes and attaches itself to the zona pellucida, ये जैसे ही आके अपने आप को attach करेगा zona pellucida से. So यहाँ पर zona pellucida is the outer layer, right? And उसके बाहर coronary data. So as soon as it attaches with the zona pellucida, what will happen? You will find this secondary oocyte will complete the meiosis 2. Secondary oocyte is going to complete the meiosis 2. Now what will happen? Now as soon as the secondary oocyte completes the meiosis 2, what will be seen happening over here? That you will find two cells have been formed. One larger cell and one smaller cell. One larger cell, one small. ऐसे नहीं बनता कि बाहर आ जाता है, अंदर ही अंदर बनेगा. It is all forming over there itself, right? So as soon as the sperm comes in contact with your particular secondary oocyte, they are going to complete the meiosis 2. And once the meiosis 2 gets completed, you will get two cells, and those two cells are going to be, one cell over here will be called as my ovum. One cell over here will be called as your ovum. And other cell here is called as your polar body. Other is been called as your polar body, right? And now we can clearly say that my meiosis 2 has got completed. So this should be clear to all of you that meiosis 2 khatam kab hoga? Once the sperm comes and fuses with the egg. Once the sperm comes and fuses with the egg, secondary oocyte, then what will happen? It will complete the meiosis 2. And after the completion of meiosis 2, now you will have the ovum, and now you have the polar body which will be seen. So this is how you will find the event will takes place. And once the ovum has been formed, ना वो एक बार ovum बन गया, so इस ovum के साथ, to this ovum only the sperm head will fuse. The nucleus in the sperm head will fuse with the ovum only. So that should be clear to all of you. This ovum which has been formed over here, इसके साथ ही fuse करेगा the nucleus है जो मेरे sperm के head का, वो उसके साथ मेरे यहाँ पे fuse करेगा. And then we will say that there's a mixing of those particular chromosomes will be happening over there. So this should be clear to all of you that at a time of like fusion of your male and female gamete, we'll find the meiosis 2 will get completed. So ये एक बात आपको याद रखनी है. So they will eventually ask you that when does the secondary oocyte will complete the meiosis 2, and you should know that after the fusion with the sperm, after the fertilization with the sperm, at that point of time, the meiosis 2 will get completed, and you will find these two things will be formed. Okay, so this should be very, very clear to all of you. So that should be clear to all of you. Now, this one question comes over here. What is corpus luteum doing in this? What is corpus luteum is basically known for? What it will be doing over here? Now, let me just write down one thing over here, and you have to remember that thing all the time. So you have to know one thing very clearly, that corpus luteum has been formed. Corpus luteum has been formed. Now, what this corpus luteum is known for? This corpus luteum is known for secretion of a hormone, and that hormone is called as your. Just wait a minute, someone has an issue. Okay, so this corpus luteum which is being formed over here, this corpus luteum is going to be secreting something known as your progesterone. It's going to be releasing something like your progesterone. So that should be clear to all of you. कि कॉर्पस लुटियम बनाने का पर्पस ही होता है that you can release the progesterone. Okay, so that should be clear to you, right? Now there's one thing I want to ask all of you,
that when the secondary oocyte was released, when the secondary oocyte was released, there were two possibilities. There were two possibilities. One possibility was what? That fertilization might occur. There might be a presence of a male gamete, and that can lead to fertilization, right? That's one possibility. Second possibility, there is no sperm over there. Second possibility is going to be there is no sperm, so there will be no fertilization. यही दो पॉसिबिलिटी ना, जब आपने सेकेंडरी साइड को वहां पे रिलीज कर दिया, देन देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फाइंड द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द fallopian tube, or there might be no sperm and there will be no fertilization, right? So how the things are going to change if there is a fertilization or no fertilization is something we'll try to see later. But right now you have to understand that when the secondary oocyte is getting released, जब secondary oocyte को यहाँ पे आप release करते हो, so वो time पे you will find either there is a possibility of fertilization or there will be a no fertilization which will be happening. If there is no sperm, there is no fertilization. तो उसके बाद क्या होता है, we'll try to understand that thing later. ओके सो पहले तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेरा सेकेंडरी oocyte मेरा यहाँ पे रिलीज हुआ, एंड उसके बाद क्या हुआ, यू हैव टू नो दैट व्हेन इट कंप्लीट द meiosis 2, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द corpus luteum has been formed. It has been formed to make the progesterone. So that this इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. This is something you have to remember. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ तक समझ आ रहा है? बताओ, सच्ची बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तनिष्क, मिसबा, Yes. Shikha, and who else we have? Mantasha, Aisha, Gayatri. Gayatri, is it clear to all of you? Gayatri. Gayatri is there or not? Gayatri is not saying anything. Polo, yes. Okay, okay. So now you can have a look at this picture. So these are pictures of my primary cells surrounded by my follicular cells called as my primary follicles, right? So these are the number of primary follicle you are left at puberty. This is the number you will get to see. Something we have done this. So now you can see primary follicle converting to tertiary follicle, then grafting follicle. You can see this picture is from the inside itself. We are spending some time over here because we have to ensure that this has been clear to all of you. Then only you will be able to understand the other part. So we have done this part already. Okay, this is something you already know. Now let me show you. The pictures are clear to all of you. Spermiogenesis, spermatozoa is something clear to you. Right? You also know which are the hormones which are coming and doing their job. Okay. Achha, tell me something about the sperm of head over here. When we discuss all the sperm of head, you have a neck region, you have a middle part. Middle part is known to have what? What is middle part is known to have? Mitochondria. Yeah, right. And then you have a sperm head. Now in the head part, you have this tip. This blue color tip is going to have what things I'll be finding in this particular tip? Haploid nucleus. Nahi, nahi, nahi. Enzymes and lysine. Right, enzymes and lysines. So acrosomes is something I'll be finding over here. And this part will be having the haploid nucleus. This part will be having the haploid nucleus. Okay. Then you will find, yeah, this is one thing we have discussed. You have a mitochondria. Okay, now let's have a look at the oogenesis. Right now, what we have seen, we have a prenatal means before the birth, postnatal means after the birth. So prenatal only you have a number of oogonia, right? No oogonia are formed after the birth, right? You have a first meiotic division, right, which will initiate and will arrest it in the prophase 1. It will arrest in the prophase 1, right? So now you have a primary oocyte. Now you have what is happening over here. Primary follicle developing into secondary follicle. Okay, so you can see the primary oocyte is there inside. You have the theca cells which have been formed. So you'll get to see in over there. And then after that you'll have a tertiary follicle. So tertiary follicle again will have a theca cells, antrum, secondary oocyte will be seen over here. At this stage, the primary oocyte in tertiary follicle grows in size and completes the meiotic division. It will complete the meiotic division, right? Now, there's one thing I want all of you to remember over here, that when you talk about theca interna, so you have the theca which are going to have two parts. So you have a theca interna, you have a theca externa. Theca interna is known to release a hormone known as estrogen. It is known to release a hormone known as estrogen. बस इतना याद रख लो अभी के लिए. कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो हम बाद में देखते हैं.
But itna yaad rakhna that theca interna is the structure which is known to release a hormone known as a estrogen. That is something it has been known for. So that should be clear to you. Okay, then you have a primary oocyte. Primary oocyte again will be undergoing the completion of meiosis one will be happening, right? Secondary oocyte is getting formed. ये आपका हो रहा था tertiary follicle के अंदर. This is happening in the tertiary follicle. Okay, then what happens after that? Graphene follicle बन जाता है. And now you will find. अब now what will happen? You tell me. What will happen after this? Graphene follicle बन चुका. अब क्या होगा यहाँ पे? रप्चर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte पे. बस रप्चर हो जाना है उसने यहाँ पे. The graphene follicle will rupture over. Very good, Tanishq. Graphene follicle is going to rupture over here, and once the graphene follicle is going to rupture, you will find the secondary oocyte is getting released. The secondary oocyte will get released over here, right? And that secondary oocyte when get released is called my ovulation. That is called as my ovulation. It is my secondary oocyte that is getting released. Okay, so this is something you find happening. And these are all this water we have seen over there. This is written in the statement. ये सब आप एक बार अपने से आप बाद में देख सकते हैं. Okay. So now my secondary oocyte, which is also been in the simple terms called as my ovum, right, will get released over here. Right. So now we have to start with the menstrual cycle. Okay. Now I have already told you that my secondary oocyte will complete the meiosis 2 after the fertilization. So वो होगा बाद में. Now let's start with the event of the menstrual cycle. So menstrual cycle are the cyclic changes exhibited by the female of primates during the reproductive phase, showing changes in the activity of ovaries and the hormones. So menstrual cycle are the changes exhibited by the females of the primates during the reproductive phase, showing the change in the activity of the ovaries. And so these are some changes which are happening inside the body of all the primates. Now primate means what? इसमें आपके बंदर भी आएंगे, chimpanzee भी आएंगे, and humans भी आएंगे. So you'll find apes, monkeys, humans, everything will come under the primates. All of them will show the menstrual cycle. Okay. So first menstruation begins at a puberty. As soon as a girl hits a puberty, so as soon as a girl hits 13 years of age, you will find the menstruation is going to begin. Menstruation is going to initiate. And that is called as the menarche. That is called as a menarche. Okay, so it is a 28-day cycle. Do remember this thing very clearly that when we discuss all the menstrual cycle, it is going to be a 28-day cycle. It is a 28 days cycle. Okay, so we'll try to see all those days carefully. In humans, menstruation is repeated at average interval of around 20 to 29 days. That is the time period of in the human beings. Cycle of events from one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle. From one menstruation to another is called as the menstrual cycle. So now it has been divided into three parts. What are the three parts? You have a menstrual phase, follicular phase, and the luteal phase. अब यहाँ से हम अपना सीखना चालू करेंगे. Now from here onwards we'll try to understand what are these phases and what are the events which are happening over here. This is a graph picture of your NCERT. So these are the three phases which we have to understand very carefully. So these are the three phases which we have to understand. By the way, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही सबको यहाँ पे? आ रही आवाज नहीं आ रही? तो yeah, give some reaction always, because again I have told you the network यहाँ पे fluctuate होगा because I am connected via phone. So let me know that. Okay, so now let's start with the menstrual flow. Okay, now when we discuss a menstrual flow, now pay attention here, the answer. When we discuss the menstrual flow, a few things you have to understand over here. What is happening during this particular stage? Just give me a minute. All right. So when we discuss a menstrual flow over here, what is actually happening in this time period? Now, the menstrual flow generally lasts for 1 to 5 days, right? This event is going to last for 1 to 5 days. It generally lasts for 1 to 5 days. Now, what actually happens during the menstrual flow? That is something we have to understand. So you know that in the female reproductive tract, there's going to be uterus, right? In the female reproductive tract, there's going to be uterus. And uterus will have the innermost lining. What is the innermost lining of uterus known as?
Innermost layer of uterus is known as what? बताओ. अरे Endometrium. thumbs up नहीं करना. हाँ, right. Very good, Tanesh. True. The innermost layer of uterus is going to be called as the endometrium. The innermost layer of uterus will be called as the endometrium. Endometrium. Now, what actually happens with the endometrium in the menstrual flow? That endometrium will get broken down. So endometrium over here gets broken down. So it was developed, इसे develop किया गया था, and now it's getting broken down. So it is getting broken down. So metrium has been broken down. It's been broken, right? So all the blood vessels which have been formed over here, all the blood vessels. So when I say it has been broken, that means all the blood vessels are also broken. So blood vessels have been broken over here, and all the blood vessels and tissues are removed from this particular area. So blood vessels and tissues have been removed from the endometrium, and once they have been removed, they will come out in a form of the blood. So once you remove all the blood vessels and the tissues in the endometrium, they will be coming out in a form of blood. So they comes out in a form of blood, right? And this blood is going to coming out through the vagina, right? So everything is getting slogged up and everything is coming out in a form of blood through vagina. Through vagina. Through vagina. And this flow of blood will last for 1 to 5 days. This flow of blood will last for 1 to 5 days, and this is called as the menstrual flow. So during the menstrual flow, you have to be very certain with this thing that you will find that within the uterus, there's going to be endometrium, and you have endometrium which has been developed. ये वो endometrium है जिसको develop किया गया, तो इसे हम कहते हैं endometrium lining. इसको हम even बोलते हैं आप as endometrium lining. And this endometrium lining will get broken down. So what kind of development has been seen over here? यहाँ पे क्या development आपको मिल रहा है? यहाँ पे आपने टिश्यू बनाए थे, कई सारे आपके यहाँ पे टिश्यू बनाए थे, यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स थी. So everything is getting removed. Everything has been broken down and been removed from that particular area. And once it has been removed, it is coming out in a form of the blood through vagina. And this event will last for 1 to 5 days, and this event is being called as the menstrual flow. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये हो रहा है, this is something which has been happening. How does endometrium has so many things getting formed? Who is actually promoting formation of all those things? So what has been happening over here? Now understand this thing. This endometrium was developed. इसको हमने develop किया था for the possible fertilization. याद रखना, please remember this thing very carefully, that endometrium is a site where the implantation takes place. Endometrium is a site where the implantation takes place. If the implantation does not take place, if there is no fertilization, there is no implantation. You know that. And if the implantation does not take place, everything which has been formed in the endometrium, whatever has been formed in the endometrium, will get come out in a form of blood through vagina, and that is called as a menstrual flow. Right? इतनी बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे. अभी इसको क्लैरिटी आपको और आएगी. विद द कोर्स ऑफ टाइम यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस. बट क्या आपको इतना स्लाइड पे जो लिखा हुआ है क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? Alright, okay, great. Mantasha, is it clear to you? Mantasha, Misbah, is it clear to you? Misbah is there or not? Yes. हाँ जी मैडम, थम्स अप दो. आयशा बताइए, क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes, sir. Thank you. So now this is something we'll find happening over here. So that's a menstrual flow, right? After that, you have a second stage, right? And you will understand everything, how it has been related to each other. So after first to 5 days, then you'll have a second stage. Second stage over here is going to be your follicular phase. We are done with the menstrual phase that lasts for 1 to 5 days, and then you have the follicular phase. So this something should be clear to you that it will last to 1 to 5 days, right? Then there's going to be a follicular phase that is going to last from 6 to 13 days.
So follicular phase is going to last for 6 to 13 days. So you have a plenty of time spent in the follicular stage. Now let's see what is the follicular stage. Let's try to see that. Okay, just wait a minute. Follicular stage. Now what do you find? Now follicular stage is also called as your, is also known as proliferative stage. Proliferative stage means यहाँ पे कुछ develop किया जा रहा है. So there's something which is getting formed over here. There's a stage where something is getting formed. Now let's see what will be happening in this particular stage. So basically now you know that everything has been slogged off. Your menstrual flow has taken place. Now you have to know one thing. In this stage, the primary follicle will convert into the Graafian follicle. So now in this stage, what will be happening? Now let's understand step by step. When the follicular stage starts, what will happen? You will find two hormones will come into picture. Two hormones will come from the hypothalamus, right? So now you will find not hypothalamus, from the anterior pituitary. From the anterior pituitary, you will find two hormones will be coming. And those two hormones are going to be called as your FSH and LH. So LH and FSH, two hormones are coming from the intrapituitary, right? And they will go and tell the ovary to do something. So these hormones are actually coming from the top and they will come and tell the ovary. So they will go and hit the ovary, right? Now, under the influence of LH and FSH, what will be happening? You will find the primary follicle will start developing. The primary follicle will start developing. So you'll find the primary follicle will start developing and it will turn into into the secondary follicle, right? Then it will turn into your tertiary follicle. And then ultimately it will turn into the Graafian follicle. So this development of the follicle is all something which has been happening under the influence of the FSH and LH. So FSH and LH are actually coming over and they actually help in the development of this follicular follicle. If I have to be more precise, इन दोनों में से जो FSH होता है उसका मेन काम यही होता है. उसका नाम आप देख लो. You see the name of the FSH. It is known as the follicular stimulating hormone. So this FSH, when it is going to come, this FSH will have that clear-cut role over here. That is, FSH will come, trigger the specifically ovary to start developing the follicles, and then you will find the primary follicle will turn into the Graafian follicle. Now you know that if the follicle are getting developed, you also know that the secondary oocyte will also get formed. When the tertiary follicle is formed, inside the tertiary follicle, you have the primary oocyte, and that primary oocyte will undergo the complete the meiosis 1, and the secondary oocyte will be formed. This is something you know. This is something all of you are very much clear with, right? This is something you should always remember. This is what happening under the influence of the FSH and LH, right? Now, there's one thing you should also know here is that LH जब आपका आ रहा है ना, LH के influence में एक hormone आएगा ovary में से. This one hormone will come from the ovary, and that hormone is someone which you have discussed right now. That is going to be the estrogen. अब आप मुझे बताओ कि estrogen कहाँ से आ रहा था? Tell me this estrogen was coming from which particular site? मैंने बताया था अभी. Thica interna. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So you have something like a thica interna which has been mentioned in the NCERT. NCERT को बोला कि thica interna होता है tertiary follicle के अंदर. So let's write over here. So assume that when you have a thica interna, this thica interna is going to release the what you call it as the estrogen. So basically, I can directly say that the estrogen is coming from the ovaries. Now understand how this happens. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना. LH आएगा. Now pay attention over here. LH will come. LH will come. It will go and tell the ovary. Right? It will go and tell the ovary. And ovary in return, what it will do? Follicle आपका वहाँ पे develop कर रहा है. I hope you now understand. Ovary के अंदर follicle आपके develop कर रहे हैं. And ovary what it does? It releases something known as it is going to release the estrogen.
right? Basically, you know that the estrogen is coming from the theca interna, right? Now what happens? Estrogen itself will go and tell the anterior pituitary to release more LH. So now let me just write it down this thing again so that you can remember everything all the time. Okay, second. ठीक है, अभी हम सिर्फ एलएच को फॉलो करते हैं. एफएसएच आ रहा है लेकिन उसे हम फॉलो नहीं करेंगे अभी. ठीक है, वो भी आ रहा है, बस इमेजिन करके मैं लिख नहीं रहा उसे. सो नाउ यू हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी. From this, the LH and FH is coming, right? So I'll just write अभी यहाँ पे FSH small में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अभी उसके ऊपर फोकस नहीं है. Let me focus main on my LH, right? Now you know that under the influence of the LH, specifically under the influence of the LH, what actually happens? That under the influence of the LH, you'll find the ovary are going to release something, and that something is nothing but your estrogen. So LH is going to have an influence, and under the influence of the LH, you will find the estrogen is getting released. Estrogen is getting released. Now understand what actually happens. This estrogen will itself will go and tell anterior pituitary to release more amount of LH. So estrogen यहाँ से जो आ रहा है ना, it will go and tell the anterior pituitary that you release more amount of LH. So because of that, what will happen? More LH will be released in the blood. Because of this, what will happen? More amount of LH will get released in the blood. So now you have like more amount of LH in the blood. Now what will happen? The same thing. This LH will get released. It will go and tell the ovary. It will go and tell the ovary, and then ovary will, what it will do? It will release more amount of estrogen, and the same cycle will start. That in the influence of the estrogen, now what will happen? You will find that it will again start go. It will go and will tell the anterior pituitary to release more amount of LH. So suddenly what will happen in a matter of some time, what we will find, the amount of LH is going to increase. अब इससे क्या होगा? I hope you are understanding over here. The amount of LH in the blood is going to increase. So LH level is going to increase. So LH level in the blood is going to increase. This is going to increase in blood, and it will just keep on increasing. LH और एस्ट्रोजन के यहाँ पे जो बातें हो रही है ना, एस्ट्रोजन आ रहा है जाके बोल रहा है एंटीरियर पार्ट को that release more amount of LH, right? LH going and telling the ovary that release more amount of estrogen. So because of both of them interacting, you will find the amount of LH in the blood is going to increase. And as the amount of LH in the blood is going to increase, this event is called as my LH surge. This, when the blood के अंदर, when the amount of LH is going to increase, this is called as the LH surge. This is called as your LH surge. And LH is at its peak. LH will be at its peak. So इसका जो peak आएगा, peak मतलब सबसे ज्यादा LH जो आपको blood में मिलेगा, its peak will come on the 14th day. It will come on the 14th day. And when the LH will be at its peak, at that point of time, what you will observe, the secondary oocyte will get released. So this is the day when I'll be finding the ovulation will take place. You know that when the secondary oocyte is getting released, right? When from the ovary the secondary oocyte is getting released, that event over here is called as my ovulation. So they will ask you under the influence of which hormone the ovulation will take place, and your answer is going to be your under the influence of LH. LH surge. LH surge is the reason because of that the ovulation will take place, and LH surge will happen on the 14th day. So 14th day is the time when I'll have the peak amount of LH in the blood, and because of that the ovulation will take place. Here the secondary oocyte will get released. So this is something should be clear to you. This is something you'll be finding happening over here. तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है. So this is what you are finding happening in my proliferative or my follicular phase. अरे क्या हुआ? अच्छा आवाज आ रही है आपको? मेरी नहीं आ रही. Is it clear to are you able to hear me? People, Yes, sir. Yes. बता दिया करो. Yeah, please, because yeah, as I've told you multiple times, I have a power cut issue on my end. Okay. Yeah, just come back over here. So this is what you find happening over here. On the 14th day, you will find the ovulation will happen. Now let's come back. So now let's have a look what we have seen अभी तक यहाँ पे. Let's have a look at this graph over here. Now look at the graph. ग्राफ को हम तो थोड़ा यहाँ पे देखो, ज्यादा मत देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझो that on the ovulation आपका कहाँ पे हो रहा है. Now let's have a look at
the ovulation part. It is somewhere happening over here. This is where the ovulation is happening, right? Now see, ovulation is happening when you have a high amount of LH. Blue is the LH over here. So when you have the LH peak, that's when the ovulation will take place, and it is roughly happening on the 14th day. Okay, and when the LH is high, also you'll find the estrogen, the yellow blue one estrogen is also high, right? So because of the estrogen, the LH will go high, and then you will find the ovulation will take place over there. So this is something you should be clear with. But this is not the only thing you will find happening in the follicular phase. So follicular phase में हमने ये देखा कि ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, that my follicle is getting developed over here, and your particular this thing, what LH is getting high over here, right? Under the influence of the estrogen, this is happening. This is not the only thing which is happening. One more thing you have to understand which is happening over here. इसको ignore करो, इसको नहीं. यहाँ पे देखते हैं. One more thing you have to understand happening here is that during the follicular phase, you should know one thing very clearly, that endometrium develops. Endometrium develops. So during the follicular phase, we will find the endometrium is going to develop. Now, when I say endometrium is going to develop, that means what? New tissue and new blood vessels have been formed. तो endometrium को यहाँ पे बनाया जाता है, build किया जाता है, right? So develop बोल सकते हैं, फिर मैं कह सकता हूँ endometrium is being built over here. And when I say the endometrium is going to be building over here, that means what? Here the new tissues are getting formed. Tissues and blood vessels are getting formed. Blood vessels and tissues are getting formed over here, right? So these are the things you have been forming in the endometrium. So this is something you have been forming, or this has been formed. Now there are two questions. Question number one, that who helps in the formation of this endometrium? Who is going to actually help you to develop the endometrium? And the answer is going to be your estrogen. So under the influence of the estrogen, you will find the endometrium is going to develop. That is also another very important event. Finally, light again. This is also another very important event which is happening under the influence of the estrogen in the follicular phase. So एक क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा कि ये कौन कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन है ये कर क्यों रहे हैं? Why we are developing the endometrium over here? Then this is also बोलो तनिष्क. For implantation. Yes, the endometrium is getting developed for the possible implantation. Please know this thing very carefully, that endometrium development is being done. So endometrium development which you find happening over here, this all is being done. This all is done for the possible implantation. This all has been done for the possible implantation. If the fertilization takes place, possible implantation. If the fertilization takes place, then उसको आपको implant तो करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं? Endometrium को develop करना चालू कर देते हैं. So for the possible implantation, we will develop the endometrium over here. Okay, so you should be able to answer these two questions, that if they ask you under the influence of which hormone the endometrium is going to develop, then your answer is going to be my estrogen. Estrogen helps in the function of the endometrium, right? And why it is being done? The question is कि करा क्यों जा रहा है? Then you should know that for future में possible implantation अगर आपका होता है, so because of that we are developing the endometrium. So new blood vessels and tissues have been formed over here. So this is also something you have to know in my follicular phase. So follicular phase should be known for two things. First of all, it should be known for developing your particular follicles. That is something which will be happening over there, right? That's one thing we have discussed. Follicles are getting developed over here, right? Second thing you have to know, you will find the LH surge is happening, and during this phase only, this will lead to the ovulation. And during this stage, during this particular follicular stage, you should know that your endometrium lining will get developed. Okay, so please know this thing very carefully, that follicular stage will last for 6 to 13 days. On the 14th day, you know there is going to be ovulation. On the 14th day, there's going to be the ovulation. So that's the main day. That's when the ovulation will take place. And before ovulation, please understand this thing very carefully. Before ovulation, the endometrium is very well formed.
endometrium has been very well formed. So that should be clear to all of you. अब सच्ची सच्ची बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर कर बताओ, is it clear to you or not? Yes, sir. Yes, sir. Right? Mantasha, Gayatri is there or not? Gayatri, Aisha. Gayatri is not there. अच्छा है. ठीक है. Okay. All right. This should be clear to you. Right. So there's the menstrual phase where it lasts for like 3 to 5 days, and due to breakdown of the so that is coming in a form of mine. So if the fertilization does not takes place, then everything is going to come out. Place, right? We are done with the follicular stage and the ovulation has taken place. Now you have the luteal phase. Which is also called as my secretory phase. Now let's see what happens over here. Now let's see what will be happening. So now you will have the luteal phase. This luteal phase is also called as, just wait a minute. This luteal phase is also been called as your secretory phase. It is also known as secretory phase. Okay. Now let's see what actually happens over here. Now in this phase, now you have to just go back to the flashback and you have to remember. Now tell me something. When the Graafian follicle used to rupture, Graafian follicle used to convert into what? Corpus luteum. Right. So when the Graafian follicle used to rupture, the Graafian follicle ultimately used to convert into something known as my corpus luteum. उसी past में आप आ जाओ. It will convert into a corpus luteum. Now tell me what this corpus luteum was doing over there. क्या कर रहा था ये वहां पे? Progesterone release. Right. Corpus luteum was releasing the hormone called as progesterone. Now you have to understand. Once the ovulation हो गया, once the ovulation has taken place, so just tell on. Once the ovulation has taken place, now you know that now the corpus luteum will get formed. So corpus luteum is getting formed over here. And after the corpus luteum is formed, it will start releasing the progesterone. Now the question is कि progesterone यहाँ पे क्या करेगा? What this progesterone is going to be doing over here? So progesterone will have a role in maintaining the endometrium lining. This will play the role in maintaining the endometrium lining. It will play the role in the maintaining the endometrium lining. Whatever has been formed, endometrium lining. So whatever has been formed over there has to be maintained. जो भी आपने यहाँ पे बनाया एंडोमेट्रियम के अंदर उसको आपको मेंटेन करके वहां पे रखना है. You have to ensure that it has been, उसको मेंटेन करना है, उसको आपको नरिश करना है, right? That is something done by my progesterone. That is something you will find done by my progesterone. So progesterone is going to ensure that the endometrium lining has been maintained over there. इसको आप वहां पे मेंटेन करोगे ताकि अगर आपका पॉसिबल इम्प्लांटेशन होता है तो वो आपका वो सर्वाइव कर जाए, वहां पे वो रहे हमेशा. Okay, so this is what you find happening in the luteal phase. This is what my luteal phase is known for, right? That you maintain the endometrium lining over there, and that is all happening under the influence of the corpus luteum and progesterone getting released over there. That is something you do in this. Now, this is again something which is going to be lasting for the around like 13 days के लिए last करेगा आपका, like right from the 15th से लेके 25 days तक. This is going to last 15 से लेके 25 days तक ये आपका last करेगा. Now you can have a look over here in the graph. So now let's see. Right. So after ovulation, what is happening? You can see from here onwards, you'll have the luteal phase from the 15-day 15, right? It can last till the 25th day. It can last till over here. You will have the luteal phase, which is also known as secretory phase, right? So maintain the endometrium lining, and you, to an extent, you also help in the developing, right? So you maintain the endometrium lining, वो तो आप कर रहे हैं, and you also have, to an extent, you also have in the developing of the certain things. Okay, तो ये दो चीजें आप कर रहे होते हैं आपके luteal phase के अंदर. Now let's see what will be happening. If there's going to be no fertilization, अगर आपके यहाँ पे fertilization आपके यहाँ पे नहीं होता, now let's see what has been mentioned over here. इसको एक बार देख लेते हैं. Follicular phase under LH and FSH.
क्लास 2 मिनट रुक जाइएगा. अगेन आई हैव अ पावर कट ओवर हियर. आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है. ऑलराइट, थैंक यू. या, जस्ट वेट अ मिनट. आई एम जस्ट कनेक्टिंग अगेन विद माय हॉटस्पॉट. जस्ट 2 मिनट रुक जाओ. ऑलराइट क्लास, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लास, Yes, क्या आप sir. लोग? ऑलराइट, थैंक यू. ओके. अगेन द इलेक्ट्रिसिटी इज बैक. ऐसा जनरली होता नहीं है, आज पहली बार हो रहा है कि काफी टाइम बाद ऐसा पहली बार हो रहा है दैट आई एम फाइंडिंग लाइट आ रही है, जा रही है, वापस आ चुकी है. ठीक है, चलो. ओके, पहले ये बताओ कि मेरी स्लाइड्स दिख रही है आपको या नहीं दिख रही? आई डोंट थिंक दिख रही है. दिख रही है, नहीं दिख रही? अच्छा, दिख रही है. दिख रही है सर. Yes, sir. बोलो यार, बोलो, ऐसे बोल दिया करो. ऑलराइट, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि आप यहाँ मेंटेन करो, आप यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइन को आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो. ओके, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है. अच्छा, चलो हम पॉसिबिलिटी पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं. राइट. अब आप लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओगे. पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं इसे, बिकॉज इसको याद रखना बहुत जरूरी है. राइट. सो वी हैव टू रिवाइज दिस थिंग अगेन स्टार्टिंग से एक बार फिर सब लोग देखते हैं. आप लोग हेल्प करो रिवाइज करने में. तो आप लोग मुझे अब यहाँ पे बताओ सबसे पहली बात कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिनों का होता है? 1 to 5 days. 1 to 5. राइट, ठीक है. चलिए, आपने बोला यहाँ पे इट विल फॉर 1 to 5 days. ओके, ट्रू, ठीक है. मेंस्ट्रुअल फ्लो में बेसिकली आपका क्या हो रहा होता है? Am I audible to you people? Are you able to hear me? Yes. So, what has been happening in the menstrual flow? Yeah, Breakdown tell us. of हाँ, अच्छा मंताशा, बोलो बोलो. What is happening over here? Quickly tell us. breakdown of endometrial lining. Right, breakdown of the endometrium lining, and everything will come out in the form of the blood. So everything is going to be coming out in the form of the blood from the vagina. That is happening in the menstrual flow. So there's something to find here: the breakdown of endometrial lining cells. Breakdown of endometrium lining. That is what you find over here. Endometrium lining. That's when we are done. Then you will have the follicular phase. So this will last for 1 to 5 days, and then you'll have the follicular phase. So please explain, Tanish, what is happening in the follicular phase. Batao. So it is also known as proliferative phase. इसके अंदर पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच. एलएच के ओवरी के से मतलब प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप स्टार्ट कर देगा. जो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी उसका मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. राइट, ट्रू. और सर एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी और वहाँ पे एलएच सर्च भी देखा जाता है 40 पे. जब सेकेंडरी रिलीज होता है और ओवुलेशन हो जाता है. ठीक है. राइट, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बता दी यहाँ पे, दैट ड्यूरिंग द फॉलिकुलर स्टेज आई विल फाइंडिंग दैट माय फॉलिकल्स आर गोइंग टू डेवलप. My follicles are going to develop. That's one thing which will be happening. And to develop the follicles, so follicles are going to develop, and these follicles, are going to develop, and that development has been happening with the help of the hormones. Under the influence of two things, you will have this FSH, LH has been coming over here, right? So FSH will mainly play the role in the development of the follicles,
LH will actually go and tell the ovary, or being more precise, the developing follicle, to release the hormone. That hormone is estrogen, and that hormone is coming from the theca interna. Okay. Now, under the influence of the estrogen, you should know that the LH is going to increase in the blood. Jitna estrogen आएगा, उतना LH आपका बढ़ेगा. Okay, and then you'll have the LH surge, and LH surge, as the Tanish told us, LH surge will ultimately lead to the your ovulation. That will lead to the ovulation on the 14th day, right? So on the 14th day, the ovulation will take place over here, right? Along with that, also remember that during the follicular stage, also you will find the endometrium will also get developed. This is also the time where I'll be finding the endometrium will get developed. So this is a proliferative phase. This is the phase we'll find the endometrium is getting developed. So endometrium is also developing over here. Endometrium develops. And endometrium isn't developing for the possible embryo. So this will be happening. And then after that, you will have the luteal phase. So tell us, Shikha, what has been happening in the luteal phase? Yes, so luteal phase. In luteal phase, the Graafian follicle ruptures into the corpus luteum, and it releases a hormone progesterone. which mentions- Shikha, 1 second. Graafian follicle तो पहले रप्चर हो चुका है, क्योंकि हो गया ना ओवुलेशन यहाँ पे 14 डे पे ओवुलेशन हो चुका है, तो रप्चर तो पहले ही हो गया. आपको बताना है यहाँ से that the rupture follicle now will convert into something. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना. बोलो. Yes, sir. So the ruptured follicle, corpus luteum, will release progesterone, which maintains the endometrium lining. Right. Okay. So that is what we will be finding happening over. So you should always, yeah, very true. So Graafian follicle, which has been now remaining. So now we have a Graafian follicle which has been there. वो rupture हो चुका है, इसने release कर दिया आपका the ova, right? The oocyte. Now this will actually remaining Graafian follicle will convert into my corpus luteum. This will convert into the corpus luteum. And now this corpus luteum is known to release your particular hormone, and that hormone is going to be called as progesterone. And that progesterone is someone who is going to maintain the endometrium lining. जो भी आपने बना के रखे ना endometrium lining, उसको maintain करेगा वो, उसको maintain करेगा, and to an extent थोड़ा development में भी वो help करेगा, but mainly इसका यहाँ पे काम होगा to maintain the endometrium lining, right? For the possible implantation. So that is something we will be finding over here. Okay, so ये हमने यहाँ पे देख लिया. Right, so that's my follicular phase. So these are the things will be very much clear to you. This is my follicular phase. Maximum amount of LH will be on the 14th day, right? Rupture of Graafian follicle, release of the ovum. Then we will get to see what? Then we have a luteal phase. So now we have a Graafian follicle which will now convert into the corpus luteum and release the progesterone. Okay, that is going to be having the role of maintenance of the endometrium lining. So that will be maintained over here. Now, so why you have to maintain the endometrium lining? The answer is going to be implantation of fertilized ovum. To have an implantation of the fertilized ovum, you have to maintain the lining. Okay. So now let me tell you one thing very clearly over here. So this is something we have seen. अब यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे add करना चाहूँगा. Let me add one thing over here. Let me add this thing somewhere over here. Now there are two possibilities. Let's understand and remember the possibility very carefully. Right? There are two possibilities. One possibility is going to be that no sperm in fallopian tube. No sperm is there in the fallopian tube. Right? Obviously, if there is no sexual activity, then there's going to be no sperm in the fallopian tube. Right? Now, if there is going to be no sperm in the fallopian tube, then see what will be happening. If there's no sperm in the fallopian tube, then what are the possibilities of happening over here? So that means there will be no fertilization. If there's no sperm in the fallopian tube, there will be no fertilization. If there's going to be a no fertilization, please know this thing very carefully. If there's going to be a no fertilization, then in that case, you will find the complete endometrium lining will get sloughed off. If there is no fertilization, जो भी endometrium में develop किया गया था, जो भी day 15 से लेके day 25 तक, whatever has been developed, whatever has been maintained in the endometrium lining, everything will get sloughed off, right? Everything in the endometrium lining will get removed. So everything will get sloughed off. Everything, or I would say endometrium lining
endometrium lining, or I would simply write it like endometrium will get broken. Will get broken and removed. And if the endometrium is getting broken and removed, then what will happen? Everything will come out in a form of the blood. Everything will come out in a form of the blood, and that is the menstrual flow. That is going to be the menstrual flow. So that should be clear to all of you. So endometrium will be broken over and everything will come out in a form of blood, and that is the menstrual flow from which we have started the cycle. That's one possibility, right? And this is something which will happen every month. So every month, one ova is getting released, one oocyte is getting released from the ovary, right? And that oocyte will get released and it will wait for the sperm. If the sperm is not there, then what will happen? Water we have developed in that span of like after ovulation, water we have developed in the endometrium lining. Everything will get removed, everything will get slogged off and will come out in a form of the blood, and that is going to be the menstrual flow. In case if there's going to be a fertilization, in case if there's going to be a sperm, and if in case there's going to be a fertilization, so in case there's going to be a presence of a sperm, plus let's say there's going to be a, that will lead to a fertilization. So if there's going to be a fertilization, then the conditions are going to change. Then the things are going to be different over here. So please remember this thing, that if the fertilization takes place over there, then the endometrium lining will be maintained, right? Then if there's going to be a fertilization, then please know that if there's going to be a fertilization, then endometrium lining will be maintained. Then what will happen? Endometrium will be maintained. Metrium will be maintained. Right? And this is where what we will find, the implantation will take place. This is where we'll find the implantation will takes place. Will take place. So this is where you will get to see that implantation will now successfully take place if the fertilization takes place. Now, what actually happens now? If the fertilization takes place, there is no slogging off. There is no blood coming out from the vagina. There is no menstrual flow. If there is no menstrual flow, that is an indicator of a pregnancy. So if the implantation is going to be, see, if the endometrium is not getting removed, it will be maintained. Then itself, it means there's going to be a no menstrual flow, right? There's going to be a no menstrual flow. So if there's going to be a no menstrual flow, if there's a no menstrual flow, this is an indicator of a pregnancy. So couples under like married couples who are going undertaking the sexual activity, if suddenly there's going to be a stoppage of a menstrual flow, that can be a very good indicator of the pregnancy. That can be as an indicator that the girl has got conceived and she's pregnant now. So ये एक indicator आपका होता है for the pregnancy. That's one thing you have to know, right? And there's one more thing you have to remember. If there's no sperm in the fallopian tube, there is no fertilization, the endometrium is getting broken down, getting removed, and along with this, even the corpus luteum is also getting removed. जब पूरा endometrium यहाँ से निकल जाता है ना, तो उसके साथ-साथ आप corpus luteum को भी आप यहाँ से निकाल देते हो. So what will be happening? So you will find the corpus luteum is also getting removed. This will also get removed and will come out along with the menstrual flow. It will be removed, right? So if there's no fertilization, nothing has been kept over there. Everything is getting removed over there, right? If there's going to be menstruation, then you have to maintain the corpus luteum. Sorry, if there's going to be a fertilization, then you have to maintain the endometrium, and that means you will also find corpus luteum भी वहाँ पे आपको मिलेगा, right? And there's going to be a no menstrual flow, which is going to be indicator of the pregnancy. Is this clear to all of you? Is this part clear to all of you? All right, okay, ठीक है, चलो. Please let me know if there's some confusion over here. Gayatri is not in the class, क्या? So this should be clear to you. Now let's have a look. So there's my luteal phase, something we have discussed this thing. So it maintains the endometrium, right? Corpus luteum, and for the possible implantation. Now you know that. No menstruation during the pregnancy, right? So if the girl gets pregnant, then there won't be any menstruation further, right? For the next 9 months, she won't have any kind of menstruation. Okay. So if the implantation has taken place, see, if the implantation has taken place,
then there is no need for making one more primary follicle. There is no need to promote one more primary follicle formation. So that is why no menstruation during the pregnancy. Okay, so there's going to be if there's going to be no fertilization, if there's no fertilization, then what will happen? The corpus luteum will get degenerate, it will get removed, right? And along with that, you will again also find the complete endometrium lining will get removed. So corpus luteum भी आपका जाएगा यहाँ पे और आपका endometrium lining भी यहाँ पे आपकी log off हो जाएगी, and that's the menstruation. So this is something you should be very much clear with. This is something you should be very much clear with. So this is your menstrual cycle. That's your menstrual cycle of your 28 days. Okay. A menstrual cycle generally in female lasts for around like till 50 years. So 50 से 55 years तक menstrual cycle has been seen in the females, right? That is something you will get to see over there, right? And after that, there won't be any kind of menstrual cycle, and that is called as the menopause. So after the 55 years of age, there won't be any kind of menstrual cycle, and that is called the menopause. So remember what is the menopause and what is the menarche. You have to know that, right? Normal reproductive phase is between the menarche to menopause. So normal reproductive phase is going to be between the menarche and the menopause. That's what is the normal reproductive phase. So again, that is something should be clear to all of you. So यहाँ पे अब कुछ सवाल है, उसके आंसर आप दोगे हैंड रेज करके. The first menstruation is called as what? बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट का? Sir, option B. All right. Lack of menstruation is caused due to. Lack of menstruation is caused due to. मिसबा बताइए क्या होगा इसका आंसर? All of the above. All of the, very good. So you can have pregnancy as one of the key indicator, along with that stress and poor health can also lead to a lack of menstruation. Okay. Rapid secretion of LH during the mid cycle is called as. Question number 3. बताइए तनिष क्या होगा इसका आंसर 3 का? तनिष कहाँ गए? कहाँ गायब हो जाते सारे बच्चे हमारे? या मंताशा बताइए. Sir, option A. Right, LH surge will be the correct answer in this. Then, after ovulation, the Graafian follicle will transform into. Tell us, Misbah, बताइए. Option B. Right, it will come to my corpus luteum. Release of ovum from Graafian follicle is called as. ये ऐसी is going to be your ovulation, right? These are like simple question which you have seen over here, right? Now we'll be doing PYQs. अब हम इसके ऊपर बेस PYQ करेंगे, so you have to be like super careful while solving that. अब मुझे पहले PYQ स्टार्ट करने के लिए मुझे बता दो कि यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है. Tell me this. यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मिसबा, मंताशा, तनिष, शिखा, I hope it's clear to you. ठीक है? Because now while solving PIQ, you cannot give me incorrect answer. You should be very clear with whatever we have done, right? Okay, now, which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle? Think carefully and then try to answer over. Then raise your hand. Which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle? सोचना, ध्यान से सोचना. All right, Tanish, tell us क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. मिसबा, आपको क्या लग रहा है मिसबा? Option B. Option B. मिसबा, option B. शिखा क्या लग रहा है आपको? Sir, option A. And Mantasha? Sir, option A. Why option A, Mantasha? You have to explain me थोड़ा सा why option है. So because in follicular stage, in anterior pituitary, they the hormones are released, FSH and LH. They go and hit the ovary, and then primary follicle, then secondary follicle, then form tertiary follicle, then form Graafian follicle under the influence of FSH and LH. LH, चलो LH, हाँ LH, हाँ ठीक है, आगे बोलो. हाँ फिर Means, sir, because of theca interna, estrogen is released. Okay, ठीक है, right. हाँ, so theca interna से estrogen आएगा और estrogen will go and tell the anterior part to release more amount of LH. So basically LH will increase, and at that point of time estrogen will be also high over there. So it's a very good question actually. People ये क्वेश्चन को देख के पता है क्या बोलेंगे कि हमारा LH होना चाहिए यहाँ पे, आंसर हाई अमाउंट ऑफ LH कहाँ पे. लेकिन आप ये बात भी सोचो कि LH अगर नहीं है तो
ईस्ट्रोजन तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, बिकॉज दिस हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एलएच. सो यस, ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. याद रखना सब लोग यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन which will eventually help in the ovulation, because estrogen आपका ज्यादा होता है, and because of high level of estrogen you will find there's going to be a high amount of LH, and because of that you will find the ovulation will takes place. So be very careful while solving the question. Now, no new follicle develops in the luteal phase of the menstrual cycle because, think wisely. पूछा क्या क्वेश्चन वो आप यहाँ पे समझो. No new follicle develops in the luteal phase of the menstrual cycle because कोई नया follicle यहाँ पे आपका बनता क्यों नहीं है. So think wisely, take your time and then try to answer this. अच्छा, मैं इसके अंदर आपको थोड़ी हिंट देता हूँ. चलो हिंट देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हिंट देता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है. Now tell me something. In the luteal phase, which hormone will be released from the corpus luteum? Progesterone. Progesterone. In the luteal phase, so I can very clearly say in the luteal phase we'll have a good amount of progesterone in the blood. So we'll have a good amount of progesterone in blood. Now what this progesterone does now, this progesterone will go and tell the anterior pituitary. This progesterone will go and tell the anterior pituitary. It will go and tell the anterior pituitary not to release FSH and LH. It will go and tell the anterior pituitary not to release FSH and LH. अब वो क्यों मना कर रहा है उन्हें वहां पे जाके, उन्हें वो मना इसलिए कर रहा है ताकि फिजूल में FH और LH आपका ना आए, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है ना अभी. आप एक बात बताओ, FSH और LH की हमें जरूरत तब होती है व्हेन यू हैव टू डेवलप द फॉलिकल, बट अभी हमें फॉलिकल डेवलप नहीं करना है, बिकॉज अगर पॉसिबल इम्प्लांटेशन हो गया देन व्हाई यू हैव टू फॉर्म अ न्यू फॉलिकल. सो याद रखना, your progesterone is the one which will go and tell the anterior pituitary not to release FSH and LH, and that because of that what will happen, you'll have a less amount of LH and FSH in the blood. And when you have a less amount of LH and FSH in the blood, then obviously what will happen, there is no chance of development of a new follicle. सिंपल सी बात है बेटा कि इनका लेवल जब बढ़ता है, इनका जब लेवल जब आ रहा होता है, तभी आपका फॉलिकल डेवलप होगा. सो अगर आप इनको आने नहीं दोगे इंटीरियर पार्ट में से, तो नहीं होगा फॉलिकल डेवलप आपका यहाँ पे, राइट. तो ये स्टोरी याद रखना कि प्रोजेस्टेरोन जाके बोलता है इंटीरियर पार्ट को नॉट टू रिलीज FSH and LH बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दैट, राइट. अपेरेंटली अभी तक हम अभी मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ नहीं है और अभी हमें जरूरत नहीं है इनके आने की यहाँ पे. अब मुझे इसका आंसर बताओ. नाउ यू सी ओवर एंड नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर बाय रेजिंग योर हैंड. हाँ जी बताइए शिखा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. मंताशा आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. एंड आई एम अज्यूमिंग मिसबा आपको क्या लग रहा है? Option D. सबका ऑप्शन, इवन तनिष्का भी ऑप्शन डी होगा यहाँ पे. यस, दैट्स योर ऑप्शन डी. बोथ FSH and LH सेल आर लो इन द ल्यूटियल फेज. बिकॉज ऑफ दैट नया फॉलिकल मेरे यहाँ पे बनता नहीं है. ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका बढ़ेगा आपका अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मैथ्स फॉलोइंग सिंपल है, देखो ध्यान से एंड रेज योर हैंड. बताइए तनिष्क. ऑप्शन सी. शिखा क्या लग रहा है इसके अंदर? सर ऑप्शन सी. Right, option C becomes the correct answer over here. You will get to see that you have a proliferative phase that is going to be the follicular phase यहाँ पे, right? Secretory phase is my luteal phase. Menstruation is my breakdown of the endometrial lining. इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Select the incorrect statement. So think wisely, read आराम से and then tell me what can be the incorrect statement over here. So again a very simple question. You all can do this. Read wisely and tell me what can be the incorrect statement in this. Very good, beta. Very good. Right. बाकी लोग बताइए क्या होगा इनकरेक्ट. बताइए शिखा क्या होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. मिसबा क्या लग रहा है? Option D. तनिष्क. ऑप्शन ए. मंताशा आंसर आया नहीं आपका?
अरे बोलो 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 बेटा, 4 लोग की क्लास में जितना इंटरेक्शन कर सकते हो कर लो, जितना अटेंशन मिल रहा है उसका एडवांटेज ले लो। मंताशा, आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाई इट्स ऑप्शन नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये गलत है। एलएच और एफएसएच आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, राइट। बाकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या कि एलएच ट्रिगर्स द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल्स, राइट। ये बात तो आपकी सही है ना, वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है कि एलएच जाके मेल्स के अंदर यही कराता है एंड टेस्टोस्टेरोन का रिलीज, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। एफएसएच स्टिमुलेट्स सर्टुलर सेल व्हिच हेल्प्स इन स्पर्मोजेनेसिस, दैट इज आल्सो ट्रू। एफएसएच जाके सर्टुलर सेल को जाके बोलता है ताकि उस स्पर्मोजेनेसिस में आपकी मदद करते हैं। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, दैट्स आल्सो ट्रू। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा इवेंट आपका associated नहीं है with the event of the human, with the event of the ovulation in the human female? So take your time, take your 30 seconds and then tell me. Again, a simple question, you should be able to answer this. Which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? बताइए मंताशा। Sir, option C. मंताशा ऑप्शन सी कह रहे हैं, शिखा आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। डिक्रीज इन एस्ट्राडोल इज नॉट समथिंग व्हिच हैज एनी रोल टू बी प्लेड विद ओवुलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये तो हो रहा होता है, बिल्कुल सी बात है, दैट्स हैपनिंग। एलएच सर्ज भी आपका हो रहा होता है, एंड फुली डेवलपमेंट ऑफ योर ग्राफिन फॉलिकल, ये भी आपकी बात यहाँ पे सही है, राइट। एंड देन ओनली यू विल फाइंड द ओवुलेशन विल हैपन। सो डिक्रीज इन द एस्ट्राडोल इज नॉट समथिंग एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन, ठीक है, बल्कि वहां पे इंक्रीज हो रहा होता है एस्ट्राडोल मतलब एस्ट्रोजन ओनली, तो ये आपका सही नहीं है। The main function of mammalian corpus luteum is going to be what? बताइए मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? तनिष्क, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी। मिसबा आपको क्या लग रहा है? मिसबा, ऑप्शन बी। मिसबा वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया। ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे सही है। इसका काम ही होता है टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, भूलना मत, कॉर्पस लुटेम विल रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, अब ये देखो ध्यान से, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं और वो कितने दिन के लिए रहता है? ध्यान से देखो एंड देन टेल मी द आंसर। शिखा बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option C. शिखा यहाँ पे कर रहे हैं ऑप्शन सी, बाकी लोग भी देख लीजिए। तनिष्क क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन सी। ऑल राइट, मिसबा, मंताशा बोलिए। ऑप्शन Yes, सी। sir, option C. राइट, इट्स अ ल्यूटेल फेज व्हिच लास्ट फॉर अराउंड लाइक 13 डेज के लिए लास्ट करता है, सो दैट्स माय यस। चलो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, खुद से पढ़ो, खुद से आंसर करोगे हैंड रेज करके, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा। तनिष्क क्या लग रहा है? 14 से देख। शिखा क्या लग रहा है आपको? Sir, option A. राइट, ऑप्शन है आप सब लोग मिस बैन मंताशा का ऑप्शन यहाँ पे यही आएगा, दैट्स गोइंग टू बी द 14 डे पे आपका होगा यहाँ पे ओव्यूलेशन, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। व्हिच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच अकर्स? सो प्रॉपर्ली एलएच सर्ज जिसे हम कहते हैं इज माय 14th day, that's when the ovulation takes place, right? Take your time, take your 30 seconds, read the statement carefully and then try to answer them. ले लिए अपने 30 seconds ले लीजिए and then try to answer this. All right, शिखा बताइए। Sir, option B. शिखा इज सेइंग ऑप्शन बी। तनिष्क क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। तनिष्क आपने ऑप्शन बी बोला या डी बोला? सर डी। ओ, दिल्ली वाला डी, ओके, ऑल राइट, ओके। मंताशा? Sir, option B. ओके, एंड मिसबा? ऑप्शन बी। सुनाई नहीं दिया बेटा, वापस बोलना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, okay. Now let's try to see few things over here, okay. First of all, ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, यहाँ पे बात गलत हो जाती है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो मेरा हो गया यहाँ पे रॉन्ग बाय एनी मींस, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करा है, दैट मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, यहाँ पे भी ये गलत हो गया, मायोमेट्रियम बोलना नहीं चाहिए था उन लोगों ने, उन्होंने बोला एंडोमेट्रियम, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करा, ओव्यूलेशन, LH and FSH attained peak level and sharp fall in the secretion of the progesterone। अब एक बात बताओ, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या ब्लड के अंदर कहीं पे भी? डू यू No, हैव sir. प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन? होता है क्या? नो, नहीं होता। तो फिर शार्प फॉल कहाँ से होगा? अगर है ही नहीं, वो आया ही नहीं है ब्लड के अंदर, तो उसका शार्प फॉल की हम बात ही नहीं करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाती है इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प फॉल इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं ब्लड के अंदर, तो शार्प फॉल उसका होगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे गलत हो गया, सी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी आप यहाँ पे देखो, बी इज वेरी ट्रू। डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ ये आपका होगा ल्यूटियल फेज के अंदर, एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ माय प्रोजेस्टेरॉन। सो यस, ऑप्शन बी इसलिए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स व्हाई इट्स अ करेक्ट आंसर। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? मिसबा, तनिष्क, मंताशा, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, थम्स अप दे रहे हो, मुझे थम्स अप दिख नहीं रहा था। ओके, ऑलराइट। Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Now you have to read the statement again carefully and then try to answer this. पढ़ो statements को ध्यान से and then बताओ इसका आंसर क्या होगा। Alright, मिसबा बताइए। Option D. Option D you are saying. Okay. Option D. तनिष्क क्या लग रहा है आपको? दिल्ली वाला डी? Alright. यस सर। शिखा? So option D. You also option D. मंताशा? Sir, option B. Alright. Now let's take this question, एक बार इसको हम आराम से देखते हैं। Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle। मतलब ovulation आपका, वो बेसिकली वो लोग पूछे कि ovulation आपका कब हो रहा है, that's what they are actually asking you, right? At the mid of a secretory phase, नहीं ये तो आपका कोई हो नहीं सकता, that's going to be a wrong thing, ये तो आपका हो नहीं सकता, right? Just before the end of the secretory phase, नहीं, इसके बाद में secretory phase मतलब बेटा आपका luteal phase हो गया, ल्यूटियल फेज के खत्म होने के पहले होगा क्या? नहीं बेटा, तब नहीं होगा। सो ये भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट? ल्यूटियल फेज के बाद जो आपको मिलता है दैट्स अ मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका होता है ना? तो ये भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट? एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोलिफरेटिव फेज, नहीं, ये टाइम पे भी आपका ओव्यूलेशन नहीं होता। एंड देन यू हैव एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, बिल्कुल देखो, प्रोलिफरेटिव फेज आपका कब खत्म होता है? आपका 6 से लेके 13 दिनों तक ये होता है। जैसे ये खत्म हुआ, यू विल हैव योर मेन डे, दैट इज योर डे 14, and then you will find the ovulation will takes place। तब यहाँ पे ovulation आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो yes, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज द ओव्यूलेशन विल टेक्स प्लेस, राइट? सेक्रेटरी फेज के पहले या बीच में वो नहीं होगा, ठीक है? सो या दैट इज योर ऑप्शन डी। चलो, हाँ, अब ये भी ध्यान से देखना और बताना, इफ अ मैमलियन ओवम फेल टू फर्टिलाइज, Which one of the following is unlikely? इनमें से कौन सी चीज होने के चांसेस सबसे कम है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्वेश्चन को समझो यहाँ पे, जो मैमलियन ओवम इज फेल्ड टू फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, देन इनमें से कौन सी चीजें अनलाइकली है होना? बताइए तनिष्क। सर ऑप्शन सी, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? शिखा, आपको क्या लग रहा है? Sir option C. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा, आप सारे बच्चों को क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ चुका है, ठीक है? क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ।
और अगर क्वेश्चन एक बार में समझ जा रहा कोई बात नहीं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी विल अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन विद द कोर्स ऑफ योर लेक्चर्स। इफ द मैमलिन ओवम फेल टू, अगर ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन आपका नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, क्या इनमें से इवेंट आपके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका होता है नो फर्टिलाइजेशन, इफ दिस नॉट बी अ नो फर्टिलाइजेशन, राइट, अगर फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हुआ, राइट, तो आप जानते हो कि कॉपर स्लिप्टम तो चला जाएगा, है ना, कॉपर स्लिप्टम आप कहां से चला जाएगा, सो ये तो होना ही है, दैट्स ट्रू। अगर फर्टिलाइजेशन होता नहीं है देन आपका कॉपर स्लिप्टम तो आपका जाएगा वहां से, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू, राइट। सेकंड थिंग, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन विल आल्सो डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन करेगा, क्योंकि कॉपर स्लिप्टम अगर गया, अगर आप फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आपको मालूम है ना कि कॉपर स्लिप्टम आपका चला जाएगा वहां से, इट विल डिसइंटीग्रेट। अगर वो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी नीचे चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे ट्रू है ना। स्टेटमेंट डी देखो, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर बॉडी में से पूरा ब्लड फ्लो निकल जाता है देन क्या होगा, नेक्स्ट थिंग क्या होगी आपके यहाँ पे, द प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग। ये बात भी आपकी सच्ची है, प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग एज सून एज द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, राइट। बट स्टेटमेंट सी जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे अनलाइकली है, दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी हैपनिंग सडनली। Estrogen secretion further increases, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, राइट। इफ द फर्टिलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस देन जो इवेंट आपका बहुत अनलाइकली यहाँ पे होना, दैट इज गोइंग टू बी द इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन सिक्रीशन, ये आपका वहां पे नहीं होगा, दिस वोंट बी हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे समझ आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ सबको क्लियर है, राइट। अब ये बताओ ध्यान से, अब ध्यान से सोचना, withdrawal of which hormone, which of the following hormone will immediate cause the menstruation, इनमें से कौन सा हार्मोन सडनली अगर हम निकाल लेंगे that will lead to a menstruation। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, हिंट ये है, अच्छा तनिष्क बताओ क्या होगा इसका आंसर, बोलो। प्रोजेस्टेरॉन। इसको एक्सप्लेन करो तनिष्क, क्यों आप करो प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, जिसका अगर मतलब फर्टिलाइजेशन हुई है तभी वो सेक्रेट मतलब होता है एक्सेस में, नहीं तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो फिर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो तभी मेंस्ट्रुएशन आती है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, राइट। तनिष्क बिल्कुल यहाँ पे सही बता रही कि प्रोजेस्टेरॉन जब तक है ब्लड के अंदर तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरॉन आपका तभी आता है, देखो प्रोजेस्टेरॉन, देखो एक बात समझो, कॉर्पस ल्यूटियम जब आपका रहेगा दैट इज गोइंग टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो क्या होता है, वो टाइम पे द LH एंड FSH को आप बंद कर देते हो, और ये टाइम पे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ये टाइम पे मेंस्ट्रुएशन वोंट बी हैपनिंग। सो अंटिल यू हैव प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड देयर इज गोइंग टू बी नो मेंस्ट्रुएशन। ये आपने देखा है ना, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका होता है तब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होता, तब आप सिर्फ डेवलप कर रहे होते हैं, तब मेंटेन कर रहे होते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम जाता है वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन भी आपका चला जाएगा, एज सून एज द corpus luteum disintegrate, as soon as the corpus luteum disintegrate, जैसे ये disintegrate होता है, जैसे ये disintegrate होगा, soon what will be happening, soon we will find, जैसे ये गया, soon you will see the level of progesterone, the level of progesterone is going to go down। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे नीचे गया वैसे ही हमें क्या मिलेगा कि आपका मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे हो जाएगा, you will find the blood flow is going to come out through the vaginal opening as soon as the progesterone has been gone, as soon as the progesterone has been gone, what will happen, everything will get sloughed off, सब कुछ आपका निकल जाएगा। जब तक ये था तब तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन थी, जैसे ही ये गया everything will get sloughed off and come out in the form of the blood, and that is why we say withdrawal of progesterone will lead to a menstrual flow। अब मुझे बताओ मंताशा, मिसबा, और हैंड इज थम्स अप मत दो मुझे, वैसे ही बताओ क्या ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, शिखा आल्सो, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है मंताशा, Yes, sir. राइट, और जबरदस्ती यस मत बोलना, एक बार घर जाके इसे खुद से सॉल्व करना, एक बार देखना इसे एंड ट्राई टू सी कि सर ने क्या बोला, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चंस को एक बार फिर मैं कहूंगा कि घर जाके एक बार फिर सॉल्व करो, राइट। आफ्टर लाइक जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, देखो कि आप वापस सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, डू देम, एंड जो भी हमने मेंस्ट्रुअल फ्लो में आज सीखा है उसे एक बार खुद से लिख लो। वंस यू राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स देन इट बिकम्स इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन, सो प्लीज डू दैट।
right? Right, so you have to do that. So that's what we have done in today's class. We have completed the oogenesis and then we have started with the menstrual cycle and we have completed that. तो ये चीज हमने आज की है and I hope, excuse me, I hope it's clear to all of you. क्या यहाँ तक चीजें आप सबको समझ आ रही है जो आज हमने की है? और Yes, sir. Yes, sir. का एविडेंस तभी मिलता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो. जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व करने आपको तभी कॉन्फिडेंस आए कि मुझे ये समझ आ रहा है और एल्स नहीं आएगा, राइट? सो या आई विल ट्राई टू शेयर विद यू द क्वेश्चंस फॉर दिस असाइनमेंट. शेयर करता हूँ आपके साथ एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट? कल जब लोग मिलोगे, कल जब आप मुझे वापस मिलोगे ना, मेक श्योर कि इतना आपको क्लियर कट पता हो. ऑल ऑफ यू शुड नो कि oogenesis खत्म होने के बाद से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल तक यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमने क्या सीखा है. एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? अगर ये सब क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द फर्टिलाइजेशन, राइट? वी हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, वी हैव टू गेट अ ग्रिप ऑन देम, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, राइट? और कल का टेस्ट आई थिंक आप सब लोगों ने दिया था एंड मंताशा आपने भी टेस्ट दिया था ना कल का? हाँ सर, दिया था. ठीक है, कैसा